Assalamu alaikum everyone. Let's start the class. So जो आज की क्लास है हमारी उसमें we will be going to discuss paper 1 of O-level biology 5090 and the variant is 2 and the year is May June 2021. Start करते हैं. MCQ number 1. Which row is correct? तो यहाँ पे cell लिखा हुआ है tissue, organ and organ system. So we have to classify accordingly. If we talk about cell, chloroplast is not a cell. Sap vacuole is not a cell. These two structures are the organelles. If we talk about red blood cell is a cell, and neuron is also a cell, which is the cell of the nervous system. So the options could be C and D. Options cannot be A and B. If we talk about tissue, so sap vacuole is an organelle, it's not a tissue. Vascular bundle is a tissue, as you all know that it contains xylem and phloem. So vascular bundle is a tissue. If we talk about leaf is definitely an organ which contains many tissues like the upper epidermis, lower epidermis, palisade mesophyll, spongy mesophyll, xylem, phloem, vascular bundle, सब कुछ है इसके अंदर leaf के अंदर. ठीक है, so leaf is an organelle. Leaf is an organ. And if we talk about organ system, so excretory system or urinary system is an organ system. The answer will be D. Let's move on to MCQ number 2. A piece of plant tissue is transferred from a beaker of water into a concentrated sugar solution. So in this statement, examiner क्या कह रहा है? Examiner is saying that there was a piece of plant tissue which was initially present in water. As you all know, if this tissue was present in water, water has a very high water potential, right? Water has a very high water potential. So क्या हुआ होगा कि when this piece of tissue was placed in water, ठीक है, तो water has a very high water potential, as you all know. So all the water must have gone into the tissue by osmosis from a region of higher water potential to a region of lower water potential. तो ये जो piece of plant tissue है, this will be turgid, obviously. ये turgid हो जाएगा क्योंकि जब ये पानी में place हुआ था तो सारा पानी इसके अंदर चला गया होगा because water has a higher water potential. Now, the examiner is placing the same piece of plant tissue, but this time in a concentrated sugar solution. तो जो concentrated sugar solution है, if we talk about the concentrated sugar solution, obviously it has a very low water potential. Because it is concentrated, it has a lot of solute, so it has a lower water potential. So what will happen if we place the same plant tissue, which was turgid when placed in water, if we place the same plant tissue now in the concentrated salt solution, so what will happen? The water will leave the plant tissue by osmosis from a higher water potential to lower water potential. As this tissue was turgid, इस टिश्यू के अंदर बहुत ज़्यादा पानी था. This tissue was turgid, so this tissue had a higher water potential, and the concentrated sugar solution had a lower water potential. So the water will leave the plant tissue by osmosis from a region of higher water potential to a region of lower water potential. So what will happen when we place the plant tissue from water into the concentrated sugar solution? There will be movement of water out of the cells. And the volume of the tissue cells will decrease, obviously, because these tissue cells are losing water. The answer is C. Let's move on to MCQ number 3. The following statements refer to the movement of substances into and out of the cells. Okay. Statement number 1. Guys, hold on for a minute.
Let's continue. MCQ number 3. The following statements refer to the movement of substances into and out of the cells. Okay, which statements apply to active transport? So for active transport, energy from respiration is required. Is this true or false? This is true. Energy from respiration is not required. This is false. Movement occurs down a concentration gradient. This is false, because in active transport, movement is against the concentration gradient, that is from a lower concentration to a higher concentration. Net movement is from the region of higher concentration to a region of lower concentration. No. Net movement is from a region of lower concentration to a region of higher concentration. This is true. So the answer should be 1 and 5. The answer should be B. Let's move on to MCQ number 4. Which word describes an enzyme that has its active site changed by high temperatures? As we all know, when we increase the temperature, the shape of the active site is changed. That's because the enzyme vibrates very vigorously, and the enzyme loses its three-dimensional shape, and the shape of the active site changes. We say that the enzyme has been denatured. So the answer is A. Let's move on to MCQ number 5. Hydrogen carbonate indicator changes color according to the concentration of carbon dioxide present. The table shows how the hydrogen carbonate indicator changes color. Okay, तो यहाँ पे इन्होंने 3 कलर्स बताए हुए हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर के, ऑरेंज, येलो एंड पर्पल. हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर का जो कलर है वो ऑरेंज कब होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन किसकी इक्वल हो? इट मस्ट बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड concentration. This means that carbon dioxide concentration should be 0.04. If carbon dioxide concentration is 0.04%, then the color of the hydrogen carbonate indicator will be orange. Okay. The color of the hydrogen carbonate indicator will be yellow when the carbon dioxide concentration is higher than the atmospheric carbon dioxide concentration. अगर carbon dioxide concentration जो है वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन से हायर होगी, या वी कैन से 0.04% से हायर होगी, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर का कलर क्या आएगा? येलो. एंड अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लोअर है देन द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, if carbon dioxide concentration is less than 0.04%, this means that the color of the hydrogen carbonate indicator will be purple. ठीक है, तो ये जो कलर्स हैं ये कहाँ पे हमें मिलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर के? सिंपली वी ऐड हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर सॉल्यूशन इनटू अ टेस्ट ट्यूब, एंड टेस्ट ट्यूब में हम कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पुट कर देते हैं, प्लांट पुट कर देते हैं, या कोई एनिमल, या दोनों पुट कर देते हैं. ठीक है. एज यू ऑल नो that plants take up carbon dioxide during photosynthesis and plants release carbon dioxide during respiration. Animals only and only take up carbon dioxide during respiration because animals do not photosynthesize. ठीक है, तो यहाँ पे 4 test tubes इन्होंने set किए हैं. 4 test tubes were set up under different conditions. The color of the hydrogen carbonate indicator in each test tube at the start of the experiment and after 1 hour is also shown. Which test tube shows that the rate of photosynthesis and the respiration are the same? ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि कौन सी ऐसी टेस्ट ट्यूब है जो शो कर रही है कि rate of photosynthesis is equal to the rate of respiration. Over here we can see that there is a darkness in test tube A. टेस्ट ट्यूब A को darkness में रखा गया है. It means यहाँ तो photosynthesis हो ही नहीं रहा ना, ठीक है, सिर्फ respiration हो रही है, photosynthesis तो हो ही नहीं रहा. तो rate of photosynthesis और rate of respiration equal कैसे होंगे? rate of photosynthesis तो 0 है और rate of respiration कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे, because the plant will respire obviously. If you look at test tube B, so test tube B जो है उसमें plant dim light में है, इसका मतलब photosynthesis हो रहा है और obviously respiration भी हो रही होगी. And you can see that the color stays orange. What does this mean? That the carbon dioxide, the amount of carbon dioxide that is taken up by the plant in photosynthesis is equal to the amount of carbon dioxide that is released by the plant in respiration. ठीक है, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट रिलीज कर रहा है रेस्पिरेशन में. यू ऑल नो कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्ब होती है और रेस्पिरेशन में रिलीज होती है. क्योंकि देखो ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्यों कही आपसे, बिकॉज द कलर स्टेज ऑरेंज, राइट.
इट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा ना जब हमने हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर ऐड किया। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन में कुछ भी चेंज आएगा तो कलर चेंज आएगा ना, ऑरेंज से कलर या तो येलो हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो जो कलर है वो येलो हो जाएगा ऑरेंज से, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है तो कलर पर्पल हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि कलर ऑरेंज रह रहा है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन चेंज ना होने का मतलब क्या है? अच्छा, डिम लाइट है तो हम कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है और रेस्पिरेशन भी हो रही होगी, यानी फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन अप बाय द प्लांट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो रिलीज्ड बाय द प्लांट। दोनों काम हो रहे हैं, लेकिन स्टिल कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। दिस इज प्रूव्ड बाय द कलर स्टेज ऑरेंज। दिस मीन्स दैट जितनी कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्ब हो रही है उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में रिलीज हो रही है। दिस मीन्स दैट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन in case of test tube B. So test tube B is the answer because वो हमसे यही कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी टेस्ट ट्यूब है जिसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। द आंसर इज बी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब सी को देखें तो कलर चेंज आ रहा है ऑरेंज से पर्पल। व्हाट डज दिस मीन? कि मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड, मोर CO2 is absorbed then released, more CO2 is absorbed in photosynthesis। क्योंकि जब ज्यादा CO2 एब्जॉर्ब होगी ना तो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी और कलर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर का? पर्पल हो जाएगा। ठीक है, तो लेस CO2 इज रिलीज्ड एंड मोर इज एब्जॉर्ब्ड। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? कलर येलो हो गया। इट मींस मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग रिलीज्ड। ऑब्वियसली स्नेल यहाँ पे इन्होंने पुट किया हुआ है, तो स्नेल क्या करेगा? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा होगा ना, प्लांट भी रिलीज कर रहा होगा, और प्लांट जो है वो कम CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हो क्या रहा है कि प्लांट कम CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन प्लांट और एनिमल दोनों मिलकर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो कलर क्या हो जाएगा? येलो, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। फाइन, सो द आंसर ओवर हियर इज बी। MCQ number 6, what describes the upper cuticle of a leaf? So guys, जो cuticle होती है, as you all know, it's a waxy layer. It's made up of cuticle is made up of cutin, which is a waxy substance. So cuticle is basically a waxy layer on the upper and the lower surface of the leaf. ठीक है, तो ये नॉन सेल्यूलर होती है, इसमें कोई सेल नहीं होता, इसमें वैक्सी सब्सटेंस होता है। सही है। So a permeable layer allowing water to enter the leaf. No, you should know that cuticle is impermeable to water. A single layer of cells, no, cuticle never contains cells. A single layer of transparent cells, this is again wrong. The answer should be D. It's a thin non-cellular layer preventing the water loss from the leaf. As you all know that waxy cuticle is a waxy layer which is waterproof and prevents excessive loss of water by transpiration, and it is not made up of cells. It is made up of a waxy substance called cutin. Any problem up till now? Okay, let's move on to the next MCQ, that is MCQ number 7. A lack of certain mineral ions affect the growth of young plants. Which effects are caused by a lack of magnesium ions and a lack of nitrate ions? Okay, so as you all know that magnesium ions are required to make chlorophyll. So whenever magnesium ions become deficient, what happens? Leaves क्या हो जाते हैं? Yellow हो जाते हैं ना, because the green color of the leaves is due to chlorophyll. If chlorophyll नहीं बन रहा या कम बन रहा है, magnesium ions की deficiency है, magnesium ions are low in number, they are deficient, less chlorophyll is being formed, so the color of the leaf will fade, will become lighter, तो वो yellow हो जाएगा. Leaves go yellow in patches. Okay, what about the nitrate ions? Nitrate ions are required for growth, as you all know, because nitrate ions are required to make amino acids and proteins, right? तो अगर nitrate ions की deficiency है, if there is a lack of nitrate ions, then the plant is unable to form proteins. The answer is B. The graph shows some of the nutrients found in the peanuts. These are sugars, fats, and proteins. A student tested peanuts for 4 food tests. Which row shows the results? Okay, if we carry out Benedict's test. So Benedict's test, what it does, this test is used to test for reducing sugars. क्योंकि यहाँ पे reducing sugars बहुत कम है. This means we can say reducing sugars are present. तो color blue तो नहीं हो सकता ना, right?
अगर बेनेडिक्ट टेस्ट के साथ कलर ब्लू आए, इट मींस रिड्यूसिंग शुगर्स आर एब्सेंट, बट दे से द शुगर्स आर प्रेजेंट. तो कलर क्या आना चाहिए? ब्लू तो नहीं होना चाहिए. इट माइट बी ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, बट it should be yellow. Why? In the options we have yellow and red. So it should be yellow and not red. Why? Because there is a low concentration of reducing sugars. Reducing sugars की concentrations कम है ना. अगर बहुत ज्यादा होती तो कलर यहाँ पे रेड होता. If we carry out biorit test, it should be purple. Why? Because proteins are present. So we should get a purple color with biorit reagent. ठीक है. अगर proteins absent होते तो blue color होता. Because proteins are present, तो color purple होगा with biorit test. With ethanol emulsion test, we get a white suspension because fats are present. अगर fats absent होते तो clear suspension मिलती, clear solution मिलता. But because fats are present, तो emulsion test cloudy होगा या white होगा. Iodine test जो है, we will get a brown color. Why? Because starch is not found in the peanuts. तो iodine test negative होगा ना. Iodine test will not be blue black. So the answer is A. Let's move on to MCQ number 9. Which row shows factors that contribute to famine? Guys, how do we define famine? Famine is severe scarcity of food. What is meant by severe scarcity of food? When the food available is not sufficient to feed an entire population that is present in an area. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ. What is famine? जब फूड की स्कार्सिटी हो जाए, यानी जो पूरे एरिया है, पूरे एरिया में जितनी भी पॉपुलेशन है, उसको फीड करने के लिए सफिशिएंट फूड नहीं है. तो फेमाइन कब आता है? इन केस ऑफ ड्राउट. क्लाइमेट चेंज कॉजिंग ड्राउट कैन डेफिनेटली कॉज फेमाइन, क्योंकि ड्राउट की वजह से क्या होगा? क्रॉप ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी, राइट? और क्रॉप ग्रोथ अगर स्लो डाउन होगी, so there will be less food available. If we talk about destruction of tropical forest, so destruction of tropical forest have no effect on famine. Destruction of tropical forests do not contribute to famine. And why is that so? क्योंकि usually जब हम destruction कर रहे हैं tropical forest की, तो उससे क्या हो रहा है कि हम crops की जगह बना रहे होते हैं. We carry out deforestation to set up crops. सही है ना? तो destruction of tropical forest से कभी भी famine नहीं आएगा. Flooding, yes, flooding can cause famine. Why? Because flooding can damage the crops and it will decrease the availability of food. Increase human population, yes. अगर आपके पास food बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर human population बहुत ज़्यादा हो जाए, तो again increasing human population के हिसाब से आपके पास food कम पड़ जाएगा. ठीक है ना? So this will lead to famine. And increase use of fertilizers. अगर हम fertilizers को ज़्यादा use करेंगे, तो ज़्यादा food होगा, more crop yield. तो उससे famine नहीं आएगा. The answer is B. Let's move on to MCQ number 10. The diagram shows part of the human alimentary canal and associated organs. Which row describes the function of the parts shown in the diagram? Okay, structure 1. Guys, structure 1 कौन सा है? It's stomach. And if we talk about stomach, the function of the stomach is definitely digestion of protein. ठीक है, structure 1 जो है वो stomach है, और उसका function जो है, it is digestion of protein. As we all know that stomach produces a protease called pepsin, and pepsin digests proteins. If we talk about structure 3 कौन सा है? It's ileum, and you all know that ileum, the function of the ileum is the absorption of products of digestion. This is true as well. So the answer is A. For other options, you can check that these options will definitely be wrong. Structure 2 कौन सा है? Structure 2 is pancreas, and they say that pancreas, in this case, they say that pancreas is involved in the emulsification of fats. This is wrong. Why? Because the function, the emulsification of fats is caused by bile, and bile is produced by liver, which is the structure 5. So structure 5 का function है emulsification of fats and not the pancreas. ठीक है? Production of bile, structure 4. Structure 4 is the gallbladder, and gallbladder stores bile. Please note this point. It never produces bile. So this is wrong as well. And 4 कौन सा structure है? Gallbladder storing digestive enzymes. No. Gallbladder stores bile. Bile never contains digestive enzymes. ये मैंने आपको बहुत दफा बताया है. ठीक है? तो बाकी सारे options गलत हैं इसमें. Let's move on to MCQ number 11. How does water enter the root hair cells? As you all know
that whenever water enters the root hair cells, it enters by osmosis from a region of higher water potential to a region of lower water potential. So from high to low water potential by osmosis, water enters the root hair cells from high to low water potential by osmosis. Let's move on to MCQ number 12. The diagram shows the pathway of water molecules through part of a leaf, seen under a microscope in transverse section. Where does the water evaporate? So guys, तुम सबको पता है कि ट्रांसपायरेशन क्या होती है. ट्रांसपायरेशन ये वाला स्टेप है जो स्टेप डी है, in which water vapor is leaving the leaf via the stomata. Transpiration is defined as the loss of water vapor from the leaf via the stomata. But right now they're asking कि पानी evaporate कहाँ हो रहा है. डी पे तो water vapor is leaving the leaf ना. ये water vapor form कहाँ हो रहा है जहाँ पे evaporation हो रही है. And I told you guys that evaporation occurs from the mesophyll cell walls. ये जो mesophyll cells की cell walls होती हैं, these are moist. These are moist mesophyll cell walls. And यहाँ से क्या होता है, water evaporate होता है यहाँ से. Water evaporates from moist mesophyll cell walls. So when the water evaporates, it becomes water vapor. Water vapor फिर जो intercellular air spaces होते हैं, air spaces in the spongy mesophyll layer, उसके through water vapor diffuse करता है, and then the water vapor diffuses via the stomata and comes out of the leaf. Right? So the answer is C. Which row describes the function of the blood components? If we talk about plasma, plasma does not produce antibodies. The function of the plasma is not clotting. However, plasma is involved in the transport of nutrients. Platelets are involved in clotting, definitely. And white blood cells, such as the lymphocytes, are involved in the formation of antibodies. The answer is D. So guys, any problem up till now? Okay. MCQ number 14. This is a very good MCQ. The diagram shows how the volume of blood in the left ventricle of a human heart changes during one heartbeat. So diagram क्या बता रहा है? Diagram is showing that how the volume of the left ventricle, the volume of the blood in the left ventricle is changing. ये जो graph है, इसमें y-axis पे we have volume of the blood in the left ventricle, and we can see that the volume of the blood in the left ventricle rises and falls. Rise भी कर रहा है, fall भी कर रहा है, and this is happening during one heartbeat. When is the left ventricle contracting? So you guys know that whenever the left ventricle contracts, it pumps the blood into the aorta. तुम सबको पता है, right? तो जब भी left ventricle contract करेगा तो वो blood को pump कर रहा होगा aorta के अंदर. This means that left ventricle में जो blood volume है वो कम हो रही होगी. Yes or no? तो इसका आंसर क्या होगा? B. Because in B we can see that the volume of the blood in the left ventricle decreases. It means left ventricle is contracting. Fine. Okay. Let's move on to MCQ number 15. The diagram represents the blood supply to the liver and to the kidneys. Which vessels contain blood with the highest and the lowest concentration of urea? जो मैंने सबसे पहले अपनी वीडियो अपलोड की थी on YouTube, so उस वीडियो में I taught you guys the liver, और उसमें मैंने एक तुम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी जो कि कॉमनली टेस्टेड है इन MCQs. एंड वो बात क्या है? वी कैन से दैट काफी दफा एग्जामिनर जो है वो क्या करता है, वो पूछता है कि which blood vessel has the lowest concentration of urea and which blood vessel has the highest concentration of urea, और मैंने इसको बहुत अच्छी तरह जो है एक्सप्लेन किया था. So if we talk about the highest concentration of urea, तो highest concentration of urea कहाँ होती है? वन में, that is the hepatic vein. Because urea is produced by the liver, तो hepatic vein के अंदर urea की concentration highest होती है. And जो 4 है, that is the renal vein. Renal vein के अंदर urea की concentration lowest होती है. Why? Because kidneys remove urea, right? Kidneys remove urea and liver produces urea. ठीक है? तो highest concentration of urea will be in the hepatic vein, that is 1. And lowest concentration of urea will be in 4, that is the renal vein. The answer is B. Okay, let's move on to MCQ number 16. Which statement is true for aerobic respiration? Aerobic respiration in humans occurs mainly in the alveoli. No, guys, alveoli में क्या होता है? Aerobic respiration नहीं होती. Aerobic respiration क्या है? It is the breakdown of glucose to release energy, and glucose is broken down into smaller molecules, right? Alveoli में क्या होता है? Alveoli में gas exchange होता है, not respiration. Please do remember this point.
गैस एक्सचेंज क्या है कि जब गैसेस डिफ्यूज कर रही हैं between the blood and the alveoli, oxygen is going from the alveoli to the blood and carbon dioxide is going from the blood to the alveoli. This is gas exchange. This occurs in the alveoli, not aerobic respiration. Aerobic respiration हमारे cells के अंदर होती है when the glucose is broken down to release energy. Okay, aerobic respiration releases less energy than anaerobic. ये उल्टा है. Aerobic respiration releases more energy than the anaerobic. Anaerobic respiration कम energy release करती है क्योंकि anaerobic respiration में glucose is partially broken down and aerobic respiration में glucose is completely broken down. तो aerobic respiration में ज़्यादा energy release होती है. Statement B is wrong. Glucose is broken down to smaller molecules in aerobic respiration. Yes, guys, this is true. Oxygen is broken down to release energy. No. In aerobic respiration, glucose is broken down, not oxygen. So the answer is C. Let's move on to MCQ number 17. The graph shows the concentration of substance X in a person's blood before, during and after the exercise. ठीक है, तो यहाँ पे concentration है substance X की blood के अंदर, and what we see that at rest this substance is at a constant level, and when the person starts exercising, तो इसका level rise करता है इस substance का and then fall करता है. तो guys you should know that जब भी आप exercise करते हो तो एक्सरसाइज करने से आपकी ब्लड में कौन कौन से सब्सटेंसेस राइज होते हैं. देखो जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है मसल्स के अंदर. whenever we exercise, anaerobic respiration starts in the muscles and lactic acid is produced. So when you're exercising, lactic acid that is being produced in your muscles, it leaves the muscle cells and goes into the liver. तो ब्लड में लैक्टिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही होती है. नंबर 1. एक और सब्सटेंस है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज एक और सब्सटेंस है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो रही होती है, दैट इज ग्लूकोज. व्हाई? बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं ना गाइस, तो होता ये है कि जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में above the kidneys, adrenal glands, they start producing adrenaline. और एड्रिनलिन जो सिक्रेट हो रही है उसकी वजह से क्या होता है कि जो लिवर है it breaks down glycogen into glucose and releases glucose into the liver, into the blood. sorry, लिवर क्या करता है कि एड्रिनलिन पे किस तरह रिस्पॉन्ड करता है लिवर. जैसे एड्रिनलिन लिवर तक जाती है, टारगेट करती है लिवर को एड्रिनलिन, तो लिवर रिस्पॉन्ड्स बाय ब्रेकिंग डाउन glycogen into glucose and glucose is released by the liver into the blood. तो ब्लड में ग्लूकोज राइज होगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और क्या राइज होगा, लैक्टिक एसिड. तो यहाँ पे क्या ऑप्शंस है हमारे पास, वी हैव ग्लाइकोजन एंड नॉट ग्लूकोज. तो ग्लाइकोजन तो कभी भी ब्लड में नहीं आता ना, इट स्टेज इन द लिवर, इट नेवर कम्स इनटू द ब्लड. अल्कोहल भी नहीं होगा, यूरिया भी नहीं होगा. द आंसर इज लैक्टिक एसिड, दैट इज सी. MCQ number 18. During exercise, a person breathes more deeply and more frequently. ठीक है, हम सबको पता है कि during exercise what happens, the person breathes more deeply, or we can say depth of breathing increases, and the person breathes more frequently, we can say rate of breathing increases. Which is a result of this? Carbon dioxide is removed more rapidly. Yes, this is true, because if a person is breathing more deeply, ठीक है, वो ज्यादा गहरी सांस ले रहा है, more frequently breathe कर रहा है, ठीक है, मोर ब्रेथ्स पर मिनट, तो वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करेगा और ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करेगा. ठीक है ना. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड मोर रैपिडली. वेरी गुड, दिस इज द ट्रू ऑप्शन. हीट लॉस इज डिक्रीज. नो, हीट लॉस में कोई भी इफेक्ट नहीं है, बल्कि हीट लॉस तो इंक्रीज होगा, ठीक है, अगर जो है ब्रीथ करेंगे ज्यादा. तो लेस ग्लूकोज इज डिलीवर्ड टू द वर्किंग मसल्स. नो, इससे बाय ब्रीदिंग डीपली एंड बाय ब्रीदिंग मोर फ्रिक्वेंटली ग्लूकोज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. ठीक है. And more glucose should be delivered, not less glucose. Less oxygen diffuses into the blood. No, more oxygen diffuses into the blood. If we are breathing more, ठीक है, तो ज्यादा गैस एक्सचेंज होगा, more oxygen will go into the blood. Okay, let's move on to MCQ number 19. The diagram shows structures in a human which form and store urine. Liquids pass through tubes X, Y, and Z in directions shown by the arrows. Okay, let's label these. Z क्या है guys? Ureter. What is X? It's the renal artery, which is taking the blood to the kidneys. And what about Y? Renal vein, which is taking the blood away from the kidneys. Okay. So if we talk about the blood flow, तो होता ये है कि X के थ्रू ब्लड जो है वो किडनीज में जा रहा है, और किडनीज क्या कर रही हैं कि जो ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और एक्सेस वाटर है और एक्सेस मिनरल आयंस वो कहाँ पुट कर रही है, यूरिन के अंदर, और बाकी ब्लड कहाँ जा रहा है, वाई में. ठीक है, समझ में आ रही है बात. ओके,
Which statement about the volume of the liquid passing through Y in one day is correct? It is greater than that passing through X? No. देखो X में X से जो ब्लड आ रहा है ना और X में जो वॉल्यूम है वाटर की, ठीक है, सही है, या लिक्विड की, वो ज्यादा होगी देन Y. Why? Why is that so? Because जो X से ब्लड आ रहा है ना उसमें काफी पानी है, एक्सेस वाटर भी है, तो किडनी क्या कर रही है कि उस एक्सेस वाटर को निकाल के यूरिन में डाल रही है. तो वाई में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें कम वॉल्यूम होगी, ज्यादा नहीं होगी. यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वाई है उसकी वॉल्यूम एक्स से ज्यादा है, ऐसा नहीं हो सकता. किडनी कोई वॉट पुट नहीं कर रही है ब्लड के अंदर, किडनी ब्लड से वाटर निकाल रही है. सो जो ब्लड आ रहा है एक्स से, द ब्लड दैट इज कमिंग फ्रॉम द एक्स, दिस ब्लड इज लूजिंग वाटर. सो द ब्लड इन द वाई विल हैव लेस वाटर एज कंपेयर टू एक्स. और वो जो वाटर निकल गया एक्स से, ठीक है, वो कहाँ चला गया? यूरिन के अंदर चला गया. it is less than passing through Z. No. जो लिक्विड वॉल्यूम Y के थ्रू फ्लो कर रही है वो Z से लेस नहीं है, बिकॉज यूरिन तो बहुत कम प्रोड्यूस होती है, ब्लड ज्यादा होता है ना. ब्लड इज मोर इन वॉल्यूम एज कंपेयर टू द यूरिन. ठीक है, तो Y की जो लिक्विड वॉल्यूम है इट विल बी far greater than the liquid volume in Z because urine is produced in small volumes. It is much less than passing through X but slightly greater than passing through Z. No. यहाँ पे जो ऑप्शन सी है इट सेज दैट Y की जो वॉल्यूम है इट इज मच लेस देन X. नो, मच लेस नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है. X और Y में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, यानी X में वॉल्यूम थोड़ी सी ज्यादा होगी और Y में वॉल्यूम थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि ये जो डिफरेंस आ रहा है वॉल्यूम का ये यूरिन में जा रहा है. एंड एज यू ऑल नो दैट लेस वाटर फ्लोज इनटू द यूरिन. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग. इट इज स्लाइटली लेस देन दैट पासिंग थ्रू X बट मच ग्रेटर देन पासिंग थ्रू Z. दिस इज ट्रू. इफ यू टॉक अबाउट Y, तो Y की जो वॉल्यूम है ना इट्स स्लाइटली लेस देन पासिंग थ्रू X. Y की वॉल्यूम जो है वो X से थोड़ी सी कम है, दिस इज ट्रू. जबकि Y की वॉल्यूम इज फार ग्रेटर देन Z, ये लिखा हुआ है ना, बट मच ग्रेटर देन पासिंग थ्रू Z. सो द आंसर इज D. MCQ number 20. Which response will happen if a person walks into a cold environment? Hair erector muscles cause the body hairs to lay flat on the skin. This is wrong. In the cold environment, what happens? The body hairs, they erect up. They don't lay flat. ठीक है ना? Hair erector muscles contract करेंगे और जो hair हैं, they will erect. They will not lay flat. More blood flows in the capillaries near the surface of the skin. No. In the cold environment, what happens? Vasoconstriction होती है ना? Vasoconstriction occurs. In the cold environment, vasoconstriction occurs, and less blood should flow in the capillaries near the skin surface. Why? So that less heat is lost. In the cold environment, we must not lose a lot of heat. So there should be vasoconstriction and less blood should flow in the capillaries. Large body muscles contract and relax rapidly. Yes, this is the true case. This is known as shivering. When large body muscles, they contract and relax rapidly. Whenever the large muscles of the body, they're contracting and relaxing rapidly, this is called shivering. And obviously cold environment में हमें shivering होती है. The sweat glands produce a large amount of sweat. No. In the cold environment, sweat production is decreased. So the answer is C. Okay, guys. Any problem up till now? Clear है सब कुछ? MCQ number 21. The diagram shows what name of the shaded part of the brain. So as we all know that this shaded part is the cerebellum. The answer is A. What happens, MCQ number 22, what happens in the eye to produce pupil reflex to bright light? So guys, as you all know, whenever there is bright light, what happens to the pupil? Pupil constricts. Whenever there's a bright light, the diameter of the pupil decreases or the pupil constricts. And as I told you guys about the rule of 3 C's, if you remember, rule of 3 C's, circular muscles, when they contract, pupil constricts. So over here, pupil is constricting. And for that, what should happen?
circular muscles should contract. Whenever circular muscles contract, radial muscles relax. Ciliary muscle contraction, guys, ciliary muscle has no role in the pupil reflex. Ciliary muscle has a role in accommodation reflex. ठीक है, जो far vision है और जो near vision है उसको accommodate करने के लिए ciliary muscles are used. Ciliary muscles have no role in pupil reflex. In pupil reflex, only muscles of the iris are involved. Circular और radial muscles involved होते हैं. ठीक है, and suspensory ligaments भी involved नहीं है in pupil reflex. So the answer is 2 and 3. C. The diagram shows 3 positions X, Y, and Z where nerve impulses are blocked by a drug. Which person listed below moves their leg in response to a pinprick but does not feel it? यानी इसमें वो कह रहे हैं कि the person is moving their leg in response to pinprick. This means the person is having a reflex. अगर pinprick हो और कोई अपना leg move करे, ठीक है, involuntarily, तो वो क्या है? Reflex. लेकिन वो feel नहीं कर पा रहा पेन को, ठीक है, reflex हो रहा है. That means that receptor, sensory neuron, spinal cord, motor neuron, effector, ये सब intact है, यानी reflex arc intact है. तो x और y पे तो डैमेज नहीं है. अगर reflex action हो रहा है ना, तो reflex arc पूरा intact है. reflex arc हम पढ़ चुके हैं. It includes the receptor, then the sensory neuron, then the relay neuron in the spinal cord, then the motor neuron and the effector. तो ये सब कुछ intact है क्योंकि reflex हो रहा है. But the pathway which takes the electrical impulse to the brain so that we can feel the pinprick, वो pathway कौन सा है? Pathway Z. Pathway जहाँ पे एक block है Z. तो अगर person जो है, if a person is having a reflex, it means reflex arc is intact. But if the person cannot feel the pinprick, that means कि जो Z वाला pathway है, यानी जो ऊपर वाला pathway है जो brain तक जा रहा है impulse लेके, यहाँ पे block है. It means there is block at Z. So a person with a block at Z will respond to pinprick. The person will have a reflex, but the person will not feel the pinprick if there's a block at Z. There's no block at X and Y. Reflex arc is intact. Reflex हो रहा है यहाँ पे. MCQ number 24. The diagram shows how antagonistic muscles are arranged in an arm. So we can see this is the arm of the human, and ये वाला कौन सा muscle होता है जो back पे होता है? This muscle is the tricep, and the muscle in the front is the bicep. So what do they say? Which row describes the muscle action when the arm is straightened? Okay, so if the arm has to straighten, which muscle should contract? The tricep should contract. Why? Because when the tricep contracts it, yes guys, this is the tricep muscle. When it contracts, it will shorten up. This will pull the ulna, right? और ulna जाएगी नीचे. And when the ulna goes down, the arm straightens. When the tricep contracts, the bicep relaxes. So जैसे मैंने तुम सबको पढ़ाया था कि whenever we straighten the arm, this is known as extension. And extension में क्या होता है कि tricep जो है वो contract करता है and bicep relax करता है. So muscle 2 will contract and muscle 1, that is the bicep, will relax. The answer is D. Okay, MCQ number 25. Electronic cigarettes are a cigarette substitute allowing nicotine to be inhaled without the other components found in the cigarette smoke. So इस statement में वो क्या बोल रहे हैं कि there are cigarettes known as the electronic cigarettes. Electronic cigarettes में होता ये है कि when a person takes a puff of electronic cigarette, तो वो सिर्फ nicotine inhale कर रहा है. The person is not inhaling the other components of the cigarette smoke. The person is not inhaling carbon monoxide. The person is not inhaling tar. Are you getting my point? The person is not inhaling carbon monoxide. The person is not inhaling tar. The person is only inhaling nicotine. तो जो effects आएंगे ना cigarette smoking के, वो सिर्फ nicotine के effects होंगे. tar के effects और carbon monoxide के effects नहीं आएंगे. What effects of cigarette smoking will also be the effects of using electronic cigarettes? वो बोल रहे हैं कि जो normally हम cigarette smoke करते हैं, उसके कौन से effects हमें still feel होंगे, हम पे still वो effects आएंगे when we use electronic cigarettes. Smoking increases heart rate, narrows the arterioles, and increases the blood pressure. This is the answer. As you all know, we have studied
दैट निकोटीन क्या करती है, निकोटीन इंक्रीजेस द हार्ट रेट, निकोटीन इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, निकोटीन वेजो कंस्ट्रक्शन करवाती है। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट्स निकोटीन के हैं। तो क्योंकि सारे इफेक्ट्स निकोटीन के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीने से भी ये इफेक्ट्स आएंगे। स्मोकिंग इरिटेट्स द एयरवेज एंड इंक्रीजेस म्यूकस प्रोडक्शन, दिस इज द फंक्शन ऑफ द रोल ऑफ टार। तो ये नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से आपको ये इफेक्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज द रोल ऑफ टार एंड देयर इज नो टार इन द electronic cigarettes. Smoking reduces the oxygen carried by the red blood cells and reduces oxygen delivered to the tissues. This is the role of carbon monoxide. ठीक है? Whenever the oxygen carrying capacity of the blood decreases, the blood is able to carry or transport less oxygen. तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है ऑलमोस्ट इरिवर्सिबली, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है और ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करने देती। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ये रोल होता है कि वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, एंड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीने से ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज व्हेन यू आर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स यू आर नॉट इनहेलिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। स्मोकिंग नैरोज द एयरवेज एंड इंक्रीजेस कफिंग। Narrowing of airways and coughing is the role of tar. Okay. Guys, always remember this point that nicotine affects the circulatory system. निकोटीन हमेशा आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करेगी, हार्ट रेट बढ़ाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी, वेजो कंस्ट्रक्शन कराएगी। जो आपका गैस एक्सचेंज सिस्टम है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, इस पे टार का इफेक्ट होता है। ठीक है, निकोटीन का इफेक्ट हमेशा सर्कुलेटरी सिस्टम पे होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट भी सर्कुलेटरी सिस्टम पे होता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन to MCQ number 26. The diagram shows the structure of a bacterium. In what way does this differ from a cell of a fungus? तो हमें ये बताना है कि जो बैक्टीरियम है ये फंगस से किस तरह डिफरेंट है। द बैक्टीरियम हैज अ सेल मेम्ब्रेन, नो, फंगस के पास भी होती है वो तो। द बैक्टीरियम हैज अ सेल वॉल, फंगस के पास भी होती है सेल वॉल। द फंगस आल्सो हैज अ सेल वॉल। द बैक्टीरियम हैज अ साइटोप्लाज्म, फंगस आल्सो हैज अ साइटोप्लाज्म। द बैक्टीरियम हैज नो ट्रू न्यूक्लियस, यस, bacterium does not have a nucleus, whereas the cell of the fungus has a nucleus. MCQ number 27. Which microorganisms are involved in the decomposition of dead plant material? Always remember that the microorganisms which are involved in decomposition are bacteria and fungi. Only bacteria and fungi are decomposers. Viruses decomposers नहीं होते। Viruses क्या होते हैं फिर? Viruses are parasites. Always remember this point. All viruses are parasites. Viruses can never be decomposers. So bacteria and fungi are decomposers and viruses are not the decomposers. They cannot decompose the dead plant material. Let's move on to MCQ number 28. What is the reason for describing the flow of energy through an ecosystem as non-cyclic? क्या रीजन है गाइस के जो एनर्जी फ्लो है थ्रू एन इकोसिस्टम इज नॉन साइक्लिक? मैंने आपको पढ़ाया था, आई टॉट यू गाइस द नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ एनर्जी। मैंने उसमें क्या बताया था, that the energy that enters the ecosystem from the sun does not goes back to the sun. The energy that enters the ecosystem from the sun does not return back to the sun ना। तो जब कोई चीज एक सोर्स से आए और उस सोर्स तक वापस ना जाए तो इसका मतलब फ्लो साइक्लिक नहीं है, फ्लो नॉन साइक्लिक है। The energy cannot be returned to its original source. The answer is A, and that's why we say that the energy flow through an ecosystem is non-cyclic. Guys, any problem up till now? Any problem up till now? MCQ number 29. The diagram shows a complete food web. Which row identifies examples of the types of organisms in the food web? ठीक है. This is the food web and we have to state that which one is producer, which one is herbivore, which one is carnivore, and which one is consumer. So as we all know that organism 4 is a producer. Definitely, क्योंकि सारे arrows organism 4 से बाकी organisms तक जा रहे हैं, तो organism 4 जो है वो producer है। Organism 8 herbivore है, yes guys, because it is feeding on the producer. What about organism 2? Organism 2 herbivore नहीं हो सकता। Organism 2 क्या है? It's a carnivore.
right? And what about organism 7? It's a consumer. The answer is A. Let's move on to MCQ number 30. The diagram shows part of the carbon cycle. What do X, Y, and Z represent? Guys, we can see that carbon dioxide and water are taken by the green plants. Whenever green plants take up carbon dioxide and water, they do this for photosynthesis. तो जब भी plants क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को टेक अप करेंगे फ्रॉम द एयर, तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए कर रहे हैं. एंड व्हेन द ग्रीन प्लांट्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द एयर, सो दिस इज बाय विच प्रोसेस? रेस्पिरेशन. हमेशा याद रहे कि जब ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एब्जॉर्ब कर रहे होंगे तो फोटोसिंथेसिस है. एंड व्हेन द ग्रीन प्लांट्स आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दैट इज रेस्पिरेशन. ठीक है, सो एक्स इज photosynthesis and Y is respiration. What about Z? From the fossils, we are getting carbon dioxide and water. This means this is combustion. If you have fossils and if you burn the fossils, you get carbon dioxide and water, and the process is combustion. The answer is C. Let's move on to MCQ number 31. Coastal marine regions are environments with a rich plant and animal diversity. क्या बोल रहे हैं कि जो coastal marine regions हैं, ठीक है, these are the environments which have many plants and animals. ठीक है, rich plant और animal diversity है, बहुत सारे different animals और plants हैं at coastal marine regions. Which process would reduce the biodiversity of these environments? यानी कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो जाएगी? सो गाइज, यू ऑल नो अबाउट बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी इज द वेरिएशन इन द लाइफ फॉर्म्स. अगर लाइफ फॉर्म्स से वेरिएशन डिक्रीज हो रही है तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाएगी. ये जो वेरिएशन इन लाइफ फॉर्म्स होती है, इसमें कौन कौन सी वेरिएशंस आती हैं? नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, इसमें आती है जेनेटिक वेरिएशन विद इन द सेम स्पीशीज, और इसमें और क्या आता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, दैट इज हैबिटेट वेरिएशन और हैबिटेट डाइवर्सिटी. तो यहाँ पे वो हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो जाएगी. बैनिंग फिशिंग ड्यूरिंग द फिश ब्रीडिंग सीजन, इससे तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी ना. इफ यू बैन द फिशिंग ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, तो क्या होगा? ज्यादा फिशेस सर्वाइव करेंगी, एंड देयर विल बी मेनी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द फिश, देयर विल बी अ ग्रेटर जेनेटिक वेरिएशन. तो बायोडाइवर्सिटी ऐसे इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी. इंक्रीजिंग द मैश साइज फॉर एनी फिशिंग नेट्स यूज्ड, again this will increase the biodiversity. if you increase the mesh size, तो उसमें small fishes, छोटी मछलियां ट्रैप नहीं होंगी. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो मेजॉरिटी स्पीशीज होती है ना फिश की, वो स्मॉल फिशेस होती हैं. ठीक है ना, राइट? एंड उनमें वेरिएशन भी बहुत ज्यादा होती है, जेनेटिक वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है स्मॉल फिशेस में. तो बायोडाइवर्सिटी इससे इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी. इफ वी आर फिशिंग and we use mash with larger size, तो उसमें सिर्फ larger fishes आएंगी, smaller fishes नहीं आएंगी. Stopping the release of raw sewage into the sea, this will again increase the biodiversity, because if we stop the release of raw sewage क्या होता है? Sewage is the waste that come from the homes, और raw sewage में there are urine and feces. ठीक है, यानी इसमें यूरिया होता है ना. basically urea is the natural fertilizer, and you all know that whenever fertilizers are dumped into the sea, what happens? Eutrophication. तो यूट्रोफिकेशन से तो बायोडाइवर्सिटी सीवियरली रिड्यूस होती है, क्योंकि एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक प्लांट्स सब जाते हैं काम से, दे ऑल डाई. तो अगर हम रॉ सीवेज को डंप नहीं करें तो इससे तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि डंप करेंगे तो यूट्रोफिकेशन के चांसेस हैं और बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होने के चांसेस हैं. तो हम डंप नहीं कर रहे, स्टॉप कर रहे हैं. दिस विल इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी, सो सी कैन नॉट बी द ऑप्शन. Allowing fishing methods that disturb the seabed. Okay, this is the answer. If you use some fishing methods जिसकी वजह से पूरा seabed disturb हो जाए, यानी habitat destruction हो जाए, ठीक है, या organisms loss हो जाए, सही है, तो उसकी वजह से biodiversity definitely कम होगी. The answer is D. MCQ number 32. Hardwood trees in tropical rainforests are often harvested for timber. A single quick growing crop such as palm oil is then grown on the same land. वो क्या बोल रहे हैं
कि there's a species of trees known as the hardwood tree, और ये tropical rainforest में होता है, and this is often harvested for timber, and timber is used to make furniture. ठीक है, तो क्या किया जाता है कि when the hardwood trees are cut, तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट क्या होती है कि एक क्विक ग्रोइंग क्रॉप लगा देते हैं, जैसे कि पाम ऑयल क्रॉप लगा देते हैं सेम लैंड पे. तो व्हाट इफेक्ट विल रिमूविंग द रेन फॉरेस्ट हैव ऑन द एनवायरनमेंट? जब हम रेन फॉरेस्ट को रिमूव कर रहे हैं तो उससे एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट आएगा? डिक्रीज्ड रन ऑफ इनटू द रिवर्स एंड फ्लडिंग. गाइस हमेशा याद रहे कि व्हेनेवर यू कट द ट्रीज व्हाट हैपेंस? फ्लडिंग बढ़ जाती है ना, बिकॉज एज यू ऑल नो कि जो ट्री की रूट्स होती हैं व्हाट दे डू, दे होल्ड द वाटर. ठीक है ना, तो दे डिक्रीज द रन ऑफ. ट्री की रूट्स दे डिक्रीज द रन ऑफ ऑफ वाटर, बट व्हेन यू कट डाउन द ट्रीज there will be increased runoff of the water and there will be more flooding. तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग. ठीक है ना, क्योंकि आपने ट्रीज कट करके क्रॉप लगा दी है. अब इससे क्या होगा? there will be increased runoff into the rivers and there will be flooding because trees were reducing the water runoff. Improved soil structure and soil nutrients? No. Guys, whenever you carry out deforestation there is soil erosion, and soil erosion की वजह से soil infertile हो जाती है, soil loses the nutrients. ठीक है, तो soil का structure improve नहीं होगा, it will deteriorate, खराब हो जाएगा soil का structure because of the soil erosion due to the deforestation. Reduced soil erosion by the wind and rain? No, there will be increased soil erosion by the wind and rain. Reduced biodiversity of the area? Yes. Whenever you cut down the rainforest, what happens? There is reduced biodiversity. Why? Because rainforest or trees are the habitat for many organisms, as you know. So habitat is lost, many organisms are lost, that decreases the biodiversity. तो इसका आंसर क्या होगा? डी. क्योंकि जो हार्डवुड ट्रीज कट करने का जो इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे वो रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू एमसीक्यू नंबर 33. The diagram shows a part of bryophyllum plant, ठीक है, which best describes how the new plants are produced. So guys, we can see over here that this is a bryophyllum plant और इसका एक leaf है और leaf से small plants grow कर रहे हैं. और फिर क्या होता है? That small plants fall to the ground and grow into the new plant. हो ये रहा है कि ये जो bryophyllum plant है इसका leaf है, उससे न्यू प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं और फिर न्यू प्लांट्स दे फॉल ऑन टू द ग्राउंड एंड दे डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. यानी स्मॉल प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं व्हिच फॉल ऑन टू द ग्राउंड एंड दे फॉर्म अ न्यू प्लांट. ठीक है, तो ये किस तरह की रिप्रोडक्शन है? दिस इज एसेक्सुअल और सेक्सुअल? दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. सिंपली क्या हो रहा है कि लीफ की एक्सटेंशन है, लीफ से स्मॉल प्लांट्स डेवलप हो रहे हैं बाय माइटोसिस और वो स्मॉल प्लांट्स फॉल कर रहे हैं और नया प्लांट बना रहे हैं. There is no fusion of gametes. So this is definitely asexual reproduction and not sexual one. And the type of cell division involved is mitosis because meiosis is involved in sexual reproduction. Asexual reproduction में mitosis involved होती है. The answer is B. Let's move on to MCQ number 34. This is a good MCQ. 6 bean seeds were soaked in cold water. 3 of them were boiled and cooled. The boiled and the non-boiled seeds were chopped off and then placed on the surface of the agar jelly containing starch. After 2 days, all the seeds were removed and the jelly was tested with iodine solution. The diagram shows the result of the experiment. Okay guys, अब मैं इस experiment का introduction दे दूं आप सबको. हो ये रहा है कि 6 bean seeds लिए हैं. We have taken 6 bean seeds and क्या किया है कि उनमें से जो 3 seeds थे, the 3 seeds out of the 6, we have boiled them. और उन्हें कूल कर दिया है. तो जब हम 3 सीड्स को बॉईल करेंगे ना, तो बॉईल करने से जितने भी एंजाइम्स होंगे उन सीड्स के अंदर दे विल डीनेचर. सो 3 सीड्स वर बॉइल्ड, इट मींस दैट द एंजाइम्स इन दोस 3 सीड्स वर डीनेचर्ड. जो नॉन बॉइल्ड सीड्स थे उनके अंदर एंजाइम्स इंटैक्ट रहेंगे. एंड यू ऑल नो दैट सीड्स कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड अमाइलेज. ठीक है ना, सही है. देन सीड्स के साथ क्या किया है? सीड्स आर चॉप्ड ऑफ. व्हाई द सीड्स आर चॉप्ड ऑफ? सीड्स को अगर जेली पे रखा है, अगर जेली तुम सबको पता है क्या होती है, इट्स न्यूट्रिएंट मीडियम, इट्स अ जेली व्हिच कंटेन्स स्टार्च. तो क्या किया है कि सीड्स को चॉप करके अगर जेली के ऊपर रखा है. क्यों? सीड्स को चॉप करने का मकसद ये था, द पर्पस ऑफ चॉपिंग इज दैट सो दैट द अमाइलेज कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद द जेली. ठीक है ना, सीड को चॉप करेंगे तो सीड का जो चॉट पोर्शन है
वो सीड का इनर पोर्शन है जिसमें अमाइलेज होगा, एंड दिस कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद द अगर जेली, एंड अगर जेली में जो स्टार्च है उसे अमाइलेज ब्रेक डाउन कर सकता है। सो वी कैन सी द रिजल्ट्स। क्या किया है इन्होंने, इस साइड पे बॉइल्ड सीड्स रखे थे तीनों, एंड इस साइड पे दे केप्ट नॉन बॉइल्ड सीड्स, राइट, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया, अगर जेली को टेस्ट किया है विद सॉल्यूशन, iodine solution. As you all know, if starch is present, iodine solution stains, or we can say iodine solution turns blue-black. If starch is absent, iodine solution stays yellow-brown. So in case of non-boiled seeds, what do we observe? That there is an area which is yellow-brown. So जो white area key में है, this is the yellow-brown area, which means that starch is absent over here. Starch यहाँ पे absent क्यों है? Because starch was broken down by the amylase. But in this case, starch is present. The gray area is the blue-black color, and the starch is present over here. इसका मतलब boiled seeds were unable to break down starch. The starch is still present. तो ऐसा क्यों हो रहा है? What is the explanation for the results with the non-boiled bean seeds? जो non-boiled bean seeds हैं, they had intact amylase, which could break down starch, and when starch was broken down, we could see a yellow-brown area near the seeds instead of blue-black area. क्योंकि अगर starch break down नहीं होता, the agar jelly would stay blue-black. Starch breakdown हो गया, starch is now absent, and the agar jelly has stained yellow-brown. Let's move on to MCQ number 35. The diagram shows how the blood of a human fetus flows close to the mother's blood in the placenta. Which substances are present in X in higher concentration than at Y? Okay, guys, so basically this is the placenta, and this is the umbilical cord. Fine. Okay. तो X जो है, X एक ऐसी ब्लड वेसल है जो कि ब्लड लेके जा रही है टू द प्लेसेंटा। अच्छा, जो ब्लड प्लेसेंटा तक जा रहा होता है, दिस इज द ब्लड फ्रॉम द फीटस, ऐसा ही है ना? X इज कैरिंग ब्लड फ्रॉम फीटस टू द मदर। तो जो ब्लड फीटस से मदर तक जा रहा है, उस ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे ना? The blood that is going from the fetus to the mother obviously has waste products. It will have high carbon dioxide and high urea. Whereas in Y, the blood is going to the fetus. So this will have low CO2 and urea because this is the blood going to the fetus. So they say which substances are present at X in higher concentration than at Y. So X has a higher concentration of carbon dioxide and urea, whereas Y has a lower concentration of carbon dioxide and urea. The answer is B. MCQ number 36. The table shows 4 ways in which diseases may be passed from one human to another. Which row shows the ways in which HIV may be transferred? So guys, as you all know, HIV कभी भी air में transmit नहीं होता. HIV is never transmitted via air. Yes, HIV can be transmitted via blood. HIV is not usually transmitted by saliva. HIV is transmitted by semen. Semen is a fluid which contains sperm and other fluids like the seminal fluid and the prostatic secretions. तो semen में HIV transmit हो जाता है, blood से transmit हो जाता है, saliva से rare है बहुत, ठीक है? और air में कभी भी transmit नहीं होता. The answer is D. MCQ number 37. Which sex chromosomes are present in every sperm cell? Guys, मैंने तुम सबको पढ़ाया था कि if we talk about the sperm cell के अंदर या तो X क्रोमोसोम होगा या Y क्रोमोसोम होगा. ओवम के अंदर only X. ठीक है, always remember this point. तो sperm cell can either have an X chromosome और a Y chromosome, दोनों chromosomes नहीं हो सकते. ओवम के अंदर हमेशा X होता है, Y कभी भी नहीं होगा. So the answer is X or Y chromosome only. The answer is C. 37 C.
Let's move on to the MCQ number 38. This is a very good MCQ. अच्छा, इस MCQ को हम एंड में करते हैं, पहले easy MCQs कर लें. MCQ number 39. Which statements about natural selection are correct? Natural selection can lead to better adapted species surviving. This is true. तुम सबको पता है guys, natural selection क्या करती है? Natural selection is the way by which environment favors the survival of those individuals or those species which are best adapted to the environment. जो species या जो individuals environment से best adapted होंगे, environment उनके survival को favor करेगी. This is known as the natural selection. तो natural selection हमेशा जो better adapted species होती हैं उनको favor करती है, उनके survival को favor करती है. This is true. Natural selection can lead to the extinction of the species. This is true as well. Natural selection की वजह से एक species extinct हो सकती है. अगर एक species environment के लिए suitable नहीं है, environment से best adapted नहीं है, तो वो species environment में नहीं रह सकती. It will eventually become extinct. Natural selection can lead to extinction of the species, definitely. Natural selection can lead to gene mutations occurring. This is false. Guys, हमेशा याद रहे कि पहले म्यूटेशन होती है और म्यूटेशन की बेसिस पे नेचुरल सिलेक्शन होती है. हमेशा ये फ्लो चार्ट याद रखना. पहले म्यूटेशन होगी, ठीक है. म्यूटेशन की वजह से क्या आएगा? वेरिएशन. एज यू ऑल नो कि हम सब डिफरेंट क्यों हैं? वी ऑल आर डिफरेंट, वी ऑल आर वेरिएबल. हम सब में वेरिएशन है because of the different alleles, and those alleles have arose by a process of mutation. ठीक है, हमेशा पहले म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन आती है, और वेरिएशन पे फिर क्या ऐड करती है? नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन जो है वो वेरिएशन पे क्यों ऐड करती है? क्योंकि अगर दो इंडिविजुअल्स हैं और दोनों डिफरेंट हैं, दोनों में वेरिएशन है, तो एनवायरमेंट उसे सिलेक्ट करेगी जो कि बेस्ट अडेप्टेड है टू द एनवायरमेंट, और उसे सिलेक्ट नहीं करेगी जो कि बेस्ट अडेप्टेड नहीं है. अगर सारे एक जैसे हैं तो फिर वेरिएशन ही नहीं है, और वेरिएशन नहीं है तो नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं हो सकती. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कभी भी नेचुरल सिलेक्शन म्यूटेशन को लीड नहीं करती. ठीक है, म्यूटेशन लीड्स टू नेचुरल सिलेक्शन. सो दिस इज फॉल्स. द आंसर इज बी. Some stages in the production of human insulin are listed. What is the correct sequence of these stages? Human insulin production जो है वो genetic engineering से होती है. तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें correct sequence में इन steps को लिखना है. The gene for the human insulin is obtained from the human pancreas cells. Yes, this is the first step. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि human pancreas cells से human insulin gene को हम extract कर लेंगे. फिर इस gene को हम कहाँ डालेंगे, कहाँ put करेंगे? The gene for human insulin is inserted into the DNA of bacterium called E. coli. हम इस जीन को बैक्टीरियम के डीएनए में डाल देंगे. ठीक है, फिर क्या करेंगे कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई हैं, these genetically modified bacteria they are grown in large fermenters. फिर इन बैक्टीरिया को हम लार्ज फर्मेंटर्स में ग्रो करेंगे, और ये जो बैक्टीरिया हैं दे विल नाउ प्रोड्यूस इंसुलिन, और उससे क्या होगा? ह्यूमन इंसुलिन इज देन एक्सट्रैक्टेड एंड प्यूरिफाइड. ठीक है, तो ह्यूमन इंसुलिन को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और प्यूरिफाई कर लेंगे. सो द आंसर इज 3, 2, 1 and 4. द आंसर इज डी. लेट्स मूव ऑन to MCQ number 38, which is a very good MCQ. Earlobes can either be attached to the cheek or they can be free or unattached. यहाँ पे बता रहे हैं कि जो earlobes होते हैं वो या तो cheek से attached होंगे या free होंगे. This characteristic is controlled by a single gene. The allele for the attached earlobes is recessive. वो बोल रहे हैं कि जो attached earlobe है उसका allele recessive है. For example, इसको हम R कह देते हैं, small r, और जो dominant allele होगा वो capital R होगा. यानी जो अटैच्ड एयर लोब्स हैं उनका एलील रिसेसिव है, और जो फ्री एयर लोब्स हैं उनका एलील डोमिनेंट है. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास की गिवन है. तो जो वाइट ऑर्गेनिजम्स हैं, वाइट स्क्वायर या वाइट सर्कल, ठीक है, दोस ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स विद अटैच्ड एयर लोब्स. अच्छा, अटैच्ड एयर लोब्स इज बिकॉज ऑफ द रिसेसिव एलील, राइट? तो जिसके भी अटैच्ड एयर लोब्स हैं, जो भी वाइट कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है जिस भी ऑर्गेनिज्म को, उसके अटैच्ड ईयर लोब्स हैं, इट मींस उसके पास दोनों एलील्स रिसेसिव होंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि जो अटैच्ड ईयर लोब वाला एलील है वो रिसेसिव है, और वो अपने आप को सिर्फ तब एक्सप्रेस करेगा जब डोमिनेंट एलील नहीं होगा. तो अगर किसी के भी एयर लोब्स क्या हैं, अटैच्ड, तो उसके पास दोनों एलील्स कौन से होंगे गाइस? दोनों एलील्स उसके पास रिसेसिव होंगे. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमेशा एग्जामिनर आपको देता है. वो आपको बोलता है कि एक कैरेक्टरिस्टिक है which is caused by a recessive allele. तो हमेशा याद रहे कि जब भी कोई कैरेक्टरिस्टिक रिसेसिव एलील कॉज करता है तो दोनों एलील्स रिसेसिव होने चाहिए फॉर द एलील्स टू बी एक्सप्रेस्ड. ठीक है, नाउ दे से which two individuals must be heterozygous for the earlobe attachment. तो earlobe attachment के लिए कौन से दो इंडिविजुअल्स heterozygous होने चाहिए? ओके फाइन. अगर ये 6 स्मॉल r है,
और उसके पेरेंट्स 1 और 2 हैं, दिस मीन्स दैट दोनों के पास एक एक स्मॉल आर एलील होगा ना, क्योंकि एक पेरेंट से स्मॉल आर एलील यहाँ पे आया है और दूसरे पेरेंट से स्मॉल आर एलील यहाँ पे आया है। बिकॉज द टू पेरेंट्स हैव फ्री एयर लोब्स, तो उनके पास डोमिनेंट एलील भी होगा। तो 1 and 2 दोनों हेटेरोजाइगस हैं, ठीक है। तो 1 हेटेरोजाइगस हो गया, फाइन। इसके अलावा वी कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे जो चिल्ड्रन है दे हैव स्मॉल आर, तो यहाँ से एक स्मॉल आर आया होगा और यहाँ 7 से एक स्मॉल आर आया होगा, बट 7 हैज अ फ्री एयर लोब, तो इट शुड बी हेटेरोजाइगस एज वेल। इसके पास एक कैपिटल आर भी होना चाहिए क्योंकि फ्री एयर लोब है इसके पास, तो कैपिटल आर होना चाहिए। और स्मॉल आर क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये ऑफस्प्रिंग को पास ऑन कर रहा है। तो 1 and 7 आर हेटेरोजाइगोट्स। द आंसर इज ए, ठीक है, 38 है।